So in the previous lecture, we have gone through bottom-up approach and top-down approach of constructing a data warehouse. Okay, and there we have seen these two models, Kimball and Inmon. And I have asked one question, so few of you responded it correctly. Right, and those who have not given the response, do it. Okay, do give the response because I'm monitoring these things. Next, today we'll look about the differences between data mart and data warehouse once again. Okay, so let's look at the data mart and data warehouse once again. तो फिर से हम देखेंगे कि data mart और data warehouse के बीच क्या differences. First of all, data mart, you got it. This is a subset of data warehouse. So some main focus points are like first one, focus a single subject or functional organization area. ठीक है, यहाँ पे हम एक particular subject पे concentrate करते हैं. ठीक है, कहाँ? Data mart में. Data warehouse में तो सारे चीज हैं, right? But in case of data mart, we are focusing only one single subject, like sales, like marketing. Okay. Then data sources. So in case of data mart, we have relatively few sources linked to one line of business. Of course, यहाँ पे हम एक subject को concentrate कर रहे हैं. और suppose sales का जो data है, okay, someone is in waiting. Let me. So, जैसा मैंने बोला आप लोगों को कि डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस को हम फिर से एक बार देखते हैं. तो क्या first point what we have discussed that data mart is focusing only one single subject or any organization, and so data sources will be relatively few sources linked to one line of business. क्योंकि आप सेल्स के बारे में concentrate कर रहे हो, सेल्स का एक डेटा मार्ट है. So what would happen? Some few sources, क्योंकि आप data warehouse के बारे में consider करोगे, when you are considering it with the data warehouse, overall all the different data sources being integrated here, but here we are filtering them and we are focusing on only one subject area. So in case of data sources, relatively few sources linked to one line of business. Now if we talk about the size, आप इसको आप बना रहे हो तो कितना size आप consider कर सकते हो? Less than 100 GB. enough. Okay, तो आप हो सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो. Okay, you have a very big organization. In that case, the size may be increased, but not to a very big number. Okay, so in case of data mart, you'll see the size will be less than 100 GB. One more is waiting, I think with them all. Okay. So then normalization, no preference between a normalized and denormalized structure, but आप लोग ये ध्यान रखना, नॉर्म डेटा मार्ट में हम कोशिश करते हैं कि 3NF at least we try to maintain. Okay, then decision type, practical decisions pertaining to a particular business lines and ways of doing it. ठीक है, एक बिजनेस लाइन, वन बिजनेस लाइन, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. क्योंकि एक डेटा मार्ट हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि सेल्स के रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो सेल्स के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना होगा आप उससे ले सकते हो. और इसको बनाने का लगभग यहाँ पे इन केस ऑफ डॉलर्स इज लाइक whatever we have got, that is around $10,000 upwards. Okay, and setup time will be around 3 to 6 months, and data health typically summarize data with respect to that particular subject. So these are the few points regarding data mart. We are summarizing it. Okay, next data warehouse. अब इसको हमारा क्या काम है? In today's class, in today's lecture, we actually try to focus on the differences between data mart and data warehouse. Last class में भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि data mart
और डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट में क्या अलग चीज़ है, क्या डिफरेंस है, क्या ये हम फिजिकली सेपरेट कर रहे हैं या लॉजिकली कर रहे हैं. सो दैट थिंग्स एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फोकस हियर. ओके, सो डेटा वेयरहाउस फोकस ऑन enterprise wide repository of disparate data sources, right? ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. This will be disparate data sources. Okay, then data sources, many external and internal sources from different areas of an organization. Then size की बात की तो हमने देखा कि 100 GB minimum, but often in the range of a terabyte for large organization. ठीक है, यहाँ size of course greater than equal to 100 GB in case of data warehouse. और data mart में आपने देखा less than 100 GB और data warehouse में आपने देखा is greater than equal to 100 GB. Then normalization fact is concerned that modern warehouses are mostly denormalized and for quicker data querying and read performance. ठीक है, आप ये चीज मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि you try to tell me that what does it mean by this denormalization fact. Just recall my lectures on DBMS about normalization. Normalization किया और denormalization किया. What is the difference between that? Normalization और denormalization के बीच क्या difference है? डेटा मार्ट में आपने देखा कि हम मैक्सिमम टाइम हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज डेटा हो, राइट? और डेटा वेयरहाउस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम डीनॉर्मलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो आप बता सकते हो मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन? एनी वन ऑफ यू प्लीज. Sir, normalization may doesn't contain duplicate data. Right. So, but in denormalization, it will be opposite. It may contain duplicate data. Okay, that is the definition of normalization and denormalization, right? Now, I want to know that आपको हमने कहा, suppose I'm telling you, perform normalization and one case I'm telling you perform denormalization. आप कैसे करोगे? How will you do that? Any one of you, please. हाँ, बताओ. राजू, अंकित, Joyita, Kashyapi, and other guys, please try to answer that. सर नॉर्मलाइजेशन में हम लोग यूजुअली जो इसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है उसमें लाने की कोशिश करेंगे. जो उनका क्राइटेरिया वगैरह है, मतलब ब्रेक डाउन करते रहेंगे टेबल को जब तक हम लोग का रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म में आता नहीं है सर. और सर डीनॉर्मलाइजेशन सर भूल गया. कोई बात नहीं, ठीक है, सही जवाब दिया राजू ने. और कोई बताना चाहेंगे? इफ एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई. अरे बहुत सारे लोग हो अभी यहाँ पे, मुझे देखने दो कितने लोग हो. Around 40 excluding me, I think 39 students are there. Please try to answer this. The difference between normalization and denormalization, the process of doing the same. क्या कोई बताएंगे या you want me to explain? कुछ तो रेस्पॉन्स दो. सर आप ही एक्सप्लेन कर दो, कोई कुछ बोल नहीं रहा. बाकी लोग हैं या सो गए हैं सभी लोग? मौसम भी अच्छा है आज. I think all are sleeping. Anyway, so normalization and denormalization, very important concept. Raju has already told it, and I think Joyita also give the definition. So in one case, we have a suppose big table. We try to break it down. ठीक है, एक बड़ा टेबल है, आप उसको क्या करते हो? आप उसको तोड़ते हो छोटे छोटे टेबल. Okay, you are trying to breaking a big table into smaller tables. ऐसा क्यों करते हो आप? ताकि जो भी डेटा रिडंडेंसी, जो भी डेटा रिपीटेशन हो रहा है, उसको आप क्या करोगे? रिमूव करोगे. ट्राई टू रिमूव इट, ट्राई टू रिड्यूस इट. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन.
फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड नॉर्मलाइजेशन, बट मैं जब DBMS पढ़ाया था आप लोगों को तब भी बताया था आपको कि ऑलवेज वी ट्राई टू ऑब्टेन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, राइट और रॉन्ग? बताया था कि नहीं मैंने उस समय? Yes, sir. Yes, sir. यस, सो दैट इज द स्टैंडर्ड एक्चुअली। हमारे पास बहुत सारे हैं, BCNF है, 4NF है, 5NF है, इट्स नॉट इजी टू अचीव दैट। Okay, if you are attaining them at some cost, then it is okay. But I think you should try to maintain third normalization. और मैंने जब आप लोगों का ADBMS का प्रैक्टिकल कराया था तब भी आपको कुछ प्रैक्टिकल दिया था, मतलब कुछ टेबल्स दिया था, आपको बताया था कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या किया था, उसको ब्रेक करके आप देख रहे थे कि वहाँ पे ये डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, भूल गए ये सब? अभी याद आ गया? आई थिंक यू आर द बेस्ट दैट आई हैव गिवन दोस प्रैक्टिकल्स, राइट राजू एंड अदर Yes, गाइस? sir. जयता कैसे? Yes, sir. Yes, sir. आपने देखा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वैसे ही हम नॉर्मलाइजेशन करते थे, ठीक है? दैट इज द वे ऑफ डूइंग। कोई एक ऑटोमेटिक प्रोसेस वहाँ पे नहीं है, आपको खुद ही उसको रिकॉग्नाइज करना है और आपको खुद ही उसको नॉर्मलाइज करना है। अब इसका ऑपोजिट केस होगा डीनॉर्मलाइजेशन। हम जब नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हुए जा रहे थे। अब डीनॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते, वी आर इंटेंशनली ब्रिंग सम रिडंडेंसी टू आवर टेबल, ताकि क्या होगा, आप जो डेटा क्वेरी कर रहे हो, इट विल बी एनहांस, इट विल बी एनहांस इन द सेंस दैट ये क्विकर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, राजू और 102 थी, सपोज इसका आईडी है, 2-3 जगह पे रिपीट हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 102 थी राजू, 102 थी राजू, लाइक दैट। सो इन दैट केस, from the first trial, the first suppose after 20 tuples you get the response, and that will be more quicker than you are getting the same response, suppose I think 25 tuples, ठीक है? सो डीनॉर्मलाइजेशन को हम ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? या तो आप बोल सकते हो you are at neutral position, you don't try to reduce the redundancy, in which case कहाँ पे हम ये देख रहे हैं, data warehouse में, ठीक है? modern warehouse are mostly denormalized for quicker data querying and read performance, क्योंकि तब आप क्विकली रीड कर पा रहे हो, ठीक है? तो बाकी क्या है, ऑब्वियसली आप जब स्टोरेज की बात करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली तब आप रिडंडेंट डाटा को हटाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट ए मोर एफिशिएंट रिजल्ट, बट मैक्सिमम टाइम हम डुप्लीकेसी खुद ही इंटेंशनली लाते हैं। 2-3 केस के कारण आपने देखा, अभी क्विकर रेस्पॉन्स मिल रहा है और साथ में आपको एक चीज और मिलेगा कि कुछ डेटा आपका लॉस हो गया तो उसका कॉपी तो आपके पास है, ठीक है? sometimes you always try, sometimes not we always, sometimes we always we try to bring the redundancy intentionally to our database. So that case is happening in case of data warehouse, बस आपने देखा data mart में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? Next, decision types, strategic decisions that affect the entire enterprise. Obviously, this is not case that हाँ ये सेल्स डिपार्टमेंट की बात है, ये IT डिपार्टमेंट की बात है. Whatever the decisions you are going to take, that will affect the whole enterprise, the whole Kaziranga University. Suppose we are not talking about CSE department, we are not talking about the IT department. So in the case of data warehouse of this KU, then we are talking about the KU itself, right? Then cost varies often greater than $1 lakh. Okay, yeah, obviously ये 1 लाख को भूल जाओ, बट इतना याद रखो, डेटा मार्ट से ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट लगेगा। हाँ ठीक है, आजकल आप क्लाउड का हेल्प ले सकते हो, तब कुछ हद तक ये कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है? सो देन setup time at least a year for premise warehouse, and cloud data warehouse are much quicker to set up. आप सभी को पता है, all of you, I think you have one subject in this sem also regarding cloud. You all know that cloud means what? Whatever you are using, you are paying for that only, and for some particular time, right? है कि नहीं? क्लाउड का डेफिनेशन हम ऐसे ही बताते हैं कुछ, ठीक है? Yes, sir. तो यही क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। सपोज आप 16 GB रैम का सिस्टम नहीं खरीद पा रहे हो, बट आपको कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, जैसे हम रिसर्च में करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स वी ट्राई टू कंपेयर द परफॉर्मेंस एट सम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोसेसर्स,
nowadays we can easily do it with some rental basis from some cloud. चाहे IBM क्लाउड आप ले लो, कोई भी ले लो, अमेजन का ले लो, तो आप उसको इजीली कर सकते हो और साथ में क्विकली भी कर सकते हो. आपको बहुत सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So setup time will be less if you are using cloud, but of course it will be greater than those taken by data mart. ठीक है. Data health, raw data, metadata, summary data. ये सारे डेटा का डेफिनेशन में प्रीवियस आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस डेफिनेशंस in my some previous lectures. Out of them, metadata concept is very important. Otherwise, you guys all know what is raw data and you guys all know what is summary data. Summary data that is being extracted from this metadata. ठीक है. So metadata सबसे important. So मैंने ये क्यों डिस्कस किया? Because we want to discuss the differences between the data mart and data warehouse, and you have already seen the differences between them. ठीक है. Now look at this figure. अब ये फिगर देखो आप लोग. यहाँ पे बड़ा सा चीज दिख रहा है आप लोगों को. वो बोल रहा है कि हेलो आई एम ए डाटा वेयर हाउस. और यहाँ पे आपको छोटा सा चीज दिख रहा है. वो बोल रहा है एंड आई एम ए डाटा मार्ट. राइट. So these are the differences. Data mart and data warehouse. Data mart often holds only one subject area like finance, sales. Then data warehouse holds multiple subject area, all of them together like say finance, IT, sales. ठीक है. Data mart may hold more summarized data. Okay, but in case of data warehouse holds very detailed information because उससे हम फिर से extract करेंगे. ठीक है. We may use some other tools for generating or extracting the knowledge out of it. ठीक है. तो ओवरऑल इसमें भी समराइज डेटा रहेगा डेटा वेयरहाउस में, बट दैट इज आई कैन नॉट से दैट इज मोर एक्सपेंसिव. इट इज लेस एक्सपेंसिव देन द सेम ऑफ डेटा मार्ट. देन डेटा मार्ट concentrates on integrating information from a given subject area or a set of source system. But in case of data warehouse, we also integrate all data sources. अब data mart में of course आप एक सेल्स से रिलेटेड हो, आप सेल्स से रिलेटेड डाटा सोर्सेज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे. और यहाँ पे डाटा वेयरहाउस में आप ओवरऑल ऑल द डाटा सोर्सेज यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट. ठीक है. देन डाटा मार्ट इज बुल focus on a dimensional model using a star schema. You don't need to worry about what is star schema. मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बाद में. But in case of data warehouse, does not necessarily use a dimensional model, but fits some dimensional model. But क्या है, डेटा वेयरहाउस में आपका ज़रूरत क्या है, आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट हम करते हैं. ठीक है. कैसे करते हैं हम दिखाएंगे. आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग लेटर. What this means that in data mart you always try to focus on some dimensional model. मैं पहले ही आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है ये बताया था. तब भी आप लोगों को बता दिया था कि इन सिंपल वर्ड्स आप हर एक एट्रीब्यूट को एक एक डायमेंशन मान के चल रहे हो. ठीक है. यू आर कंसीडरिंग एवरी एट्रीब्यूट एज वन डायमेंशन. राइट. सो दैट इज आवर व्हाट डेटा मार्ट. इन केस ऑफ data mart we are considering that the multi-dimensional point of view. In data warehouse also, but यहाँ पे आप ये data warehouse से data लेके एक multi-dimensional view का मॉडल में आप इंक्लूड करोगे. उसको बोलते हैं डेटा मॉडल्स. और उसमें से एक इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल है स्टार स्कीमा. आई थिंक आफ्टर दिस लेक्चर, वन मोर लेक्चर, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स. ठीक है. Now I want to know whether these definitions or whether these differences are clear to you or not. Yes, sir. Clear? I think Yes, sir. Joyita, you have asked this question, so I hope this is clear to you now. Yes. If this is clear, again look at the differences in more specific way, more some baseline basis. अब एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. Take a screenshot of this. Now, have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. this, 1st question is that you will analyze these differences.
डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस के बीच क्या डिफरेंसेस है, जो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता ही दिया, बट यहाँ पे मैं और एक बेसलाइन के बेसिस पे, लाइक स्कोप क्या है, डाटा पर्सपेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, डेटा सोर्सेज क्या है, इंप्लीमेंट टाइम फ्रेम कितना रहेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, इन सबको आप लोग देखोगे एक बार और इसका जवाब दोगे, ठीक है। The first question is that what are the differences between data warehouse and data mart. You will go through this picture and you will comment the answer. Right? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? Whether this Yes, question sir. is clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब नेक्स्ट चीज में आता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टायर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। हमने डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था सिंपल डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, उसके बाद देखा आप लोगों ने डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर विथ स्टेजिंग एरिया, देन आफ्टर दैट यू हैव सीन डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर विथ स्टेजिंग एरिया एज वेल एज डाटा मार्ट, ठीक है। अब इसी चीज को और स्पेसिफिकली हम देखेंगे, वी आर ट्राई टू क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ टायर, ठीक है। अब टायर बेसिस में हम क्लासिफाई करके देखते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट वन, सिंगल टायर आर्किटेक्चर। Is this diagram visible to all of you? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Can you tell me what does it mean by tire? क्या आप कोई भी बता सकते हो कि टायर का मतलब क्या होता है? सिंगल टायर हम बोल रहे हैं, सपोज, what does it mean by tire? So layer. जी hierarchy. Right answer from both of you. Layer and hierarchy, you can say hierarchy basis. Very good answer. Okay. तो यहाँ पे आप फिर से इस डायग्राम में देखो, दिस इज अ सिंगल टायर आर्किटेक्चर, दिस इज द सोर्स लेयर, right? This is the data warehouse overall, and from the data warehouse itself, what happening is that analysis is going on directly. Means you are trying to analyze the data from the data warehouse directly. यहाँ simple है, यहाँ पे single टायर है और कोई भी टायर यहाँ पे नहीं है, right? So this figure shows that only one layer physically available, and that is none other than the first layer, source layer. Now, in this method, data warehouse are virtual. This means that the data warehouse is implemented as a multi-dimensional view of operational data created by specific middle layer or some intermediate processing layer. Single tier architecture is not periodically used in practice. Its purpose is to minimize the amount of data stored. To reach this goal, so it removes the data redundancies. तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना होगा, सिंगल टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ ये जो सोर्स लेयर है यही आपके लिए विजिबल है। डाटा वेयरहाउस तो आपके लिए काइंड ऑफ वर्चुअल थिंग नाउ, बिकॉज you don't know about that architecture here, because no more layer, no more further hierarchy among them. पहले हमें पता था कि स्टेजिंग कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो और डाटा कलेक्ट जो भी कलेक्ट कर रहे हो आप डाटा, वहां से डायरेक्ट एनालिसिस हो रहा है। किससे कर रहे हैं हम? सपोज OLAP टूल्स और OLTP टूल्स, दोस थिंग्स विल डिस्कस इन लेटर क्लास, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम्स यूज नहीं किया जाता, दिस इज वेरी सिंपल वन, ठीक है। यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ वी आर ट्राइंग टू कीप द आर्किटेक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल, ओके। सो दैट इज only one advantage of this single tier architecture. But if we talk about the disadvantages, then of course the vulnerability of this architecture lies in its failure to meet the requirement for separation between analytical and transactional processing, and these analysis queries are agreed to operational data after the middleware interprets them. In this way, queries affect transactional workload. I am going to explain this. What happens? ये जब डायग्राम आप देखोगे तो मैंने अभी अभी बोला ही था कि आप लोगों को कि एनालिसिस, when you are performing the analysis, that is being directly connected to the data warehouse, right? अब यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है, देयर इज नो सेपरेशन एट ऑल। साथ में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी कर रहे हो, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स भी यूज कर रहे हो सेम डेटा से,
right? So there is no separation at all. Or suppose वो data आपने cleanse किया नहीं, you have not done any pre-processing on the data you have collected from the source layer, from those operational data, then it is a high probability that you are going to have what? Wrong analysis of that data. ठीक है? That is the disadvantage of data single tier architecture data warehouse. मैं फिर से इसको explain करता हूँ. From this figure, it is very clear. You will see that there is no separation at all. यहाँ पे कोई भी एसेस नहीं है, ठीक है? ऑपरेशनल डाटा से डायरेक्ट आप डाटा वेयरहाउस बना रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो. एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है, राइट? तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से डाटा को स्टोर नहीं कर रहे. यू आर नॉट सेपरेटली क्रिएटिंग सम डाटा मार्ट शेयर. So what happened? Data redundancy is less in this case. If I speak technically, then in case of single tier architecture, data redundancy is less. That is good. But what happened? From the same data sources, all the data are being collected there. You are trying to perform different analysis for different tools. Tools may be either OLAP tools or OLTP tools or some query generator tools. So what happened? In such cases, some erroneous output might come because you are not performing any pre-processing tasks there. You are not performing any separation of those data. So you are directly trying to analyze those data. And that may lead you towards some erroneous analysis of data. Okay, so that is the disadvantage of single tier architecture. Now you tell me that whether this single tier architecture of data warehouse architecture is clear to you or not. क्या सिंगल टायर आर्किटेक्चर जो वेयरहाउस आर्किटेक्चर है, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Moving to the two-layer architecture. ठीक है. Now look at this diagram very carefully. अब मैं two-layer architecture की बात कर रहा हूँ. तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो सेपरेशन आ जाएगा, राइट? एक्चुअली हमने पहले ही ये चीज देख लिया था, बट टायर बेसिस कैसे क्लासिफाई करोगे आप? टायर बेसिस की जब बात आती है तो ऑब्वियसली याद रखना लेयर बेसिस. ओके, आप टू लेयर आर्किटेक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सोर्स लेयर, राइट, डाटा स्टेजिंग, देन डाटा वेयरहाउस लेयर, देन एनालिसिस. डाटा कलेक्ट कर रहे हो आप. यहाँ पे जब डाटा स्टेजिंग की बात आई तो ETL टूल्स यूज कर रहे हो. टेल मी क्विकली दैट व्हाट डज इट मीन बाय ETL? कोई एक जना जल्दी बता दो कि ETL मतलब क्या है? So extract, transform, and loading. वेरी गुड आंसर. सो जब भी आपको इसे देखेगा डेटा स्टेजिंग, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस टर्म. सो फ्रॉम द सोर्स लेयर, फ्रॉम दोस operational data, now you are using data staging, right? So from there, then we have data warehouse layer, जहाँ पे आप ETL करके दिखाई दे रहा है आपको, एक्सट्रैक्ट करके सही डेटा को रख रहे हो. सही डेटा का मतलब आप जितना हो सके आप डेटा क्लीन भी किए हो, और उसमें से आपके पास मेटा डेटा है, ठीक है? उससे आप क्या कर रहे हो? डेटा मार्ट्स भी क्रिएट कर रहे हो. अब डेटा मार्ट्स क्रिएट करने का मतलब ही है जो भी डिसएडवांटेज आपका सिंगल टायर आर्किटेक्चर में था, ठीक है, अब ये टू टायर आर्किटेक्चर में वो रिमूव कर रहे हो. फर्स्ट डेटा स्टेजिंग आ गया, राइट? देन सेकेंड आप उसको सेपरेशन भी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डेटा मार्च. तो यहाँ पे वो दो डिसएडवांटेज हट गया है, ठीक है? एंड देन योर एनालिसिस विल बी ओके नाउ. सो हम इसको टू लेयर आर्किटेक्चर बोल रहे हैं. इट्स ओके बिकॉज टू लेयर मतलब यहाँ पे सोर्स लेयर और डेटा वेयरहाउस लेयर के कारण वी आर कॉलिंग इट एज अ टू लेयर और टू टायर. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. टू लेयर आर्किटेक्चर मीन्स टू टायर आर्किटेक्चर. और why we are calling it two architecture? But because you have seen source layer and data warehouse layer. But if you look at it more carefully, then you'll see that actually we have more than two layer here. Okay,
So it is typically called two-layer architecture to highlight a separation between physically available sources and data warehouse, but it is going to contain 4 subsequent data flow stages. ठीक है, अब देखते हैं वो 4 क्या data warehouse data flow stages हैं. First, source layer. A data warehouse system uses a heterogeneous source of data. आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है. You all know that we are collecting data from different heterogeneous sources. So this data is stored initially to corporate relational database or legacy databases, and then it may come from an information system outside the corporate world. That is the source layer. Data staging. यहाँ भी क्या हो रहा है? You already know. So this is the second stage. So data staging means what? Data stored to the source should be extracted, cleansed to remove inconsistencies and fill gaps, and then integrated to merge heterogeneous sources into one single standard schema. And for that, we are taking the help of ETL. ETL means extraction, transformation, and loading tools. It can combine heterogeneous schemata and extract, transform, cleanse, validate, filter, and load the data into the data warehouse. Data staging is, I hope this is clear to you. Then data warehouse layer. So this is the third one. Information is saved to one logically centralized individual repository, that is the data warehouse. Data warehouse can be directly accessed, but it can also be used as a source for creating the data mart, which and partially replicate the data warehouse contents and are designed for specific enterprise requirements. तो इसका मतलब क्या है? आपके पास डाटा स्टेजिंग होने के बाद जहाँ पे भी आया उसको हम क्या बोल रहे हैं? डाटा वेयरहाउस लेयर बोल रहे हैं. बल्कि उस डाटा वेयरहाउस लेयर में भी हम एक्सेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डाटा मार्ट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. देन एनालिसिस. In this layer, integrated data is efficiently and flexible access to issue reports, dynamically analyze information and simulate the hypothetical business scenario, and it should feature aggregate information navigators, complex query optimizer and customer journey. तो आपने देखा, फर्स्ट आपने देखा क्या? सोर्स लेयर. ठीक है, जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड लेयर आपने देखा डाटा स्टेजिंग, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? वो डाटा क्लींसिंग कर रहे हो, इनकॉन्सिस्टेंसीज को रिमूव कर रहे हो, राइट. देन उसके जरिए आपने क्या किया? एक ETL के जरिए आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके डाटा वेयरहाउस में डाल दिया. तो आप डाटा वेयरहाउस से आप डाटा मार्ट भी बना सकते हो. अब ये डाटा मार्ट बन गया तो अल्टीमेटली आप एनालिसिस कर रहे हो. तो एनालिसिस लेयर मतलब एनालिसिस सबस्टेज लेयर में आप क्या कर रहे हो? आप उस जो सेपरेटेड डाटा है उसको इंटीग्रेटेड डाटा को सेपरेट करके रखा है आपने, उससे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. ठीक है. सो ultimately you have seen that although this we are calling it as a two-layer architecture क्योंकि यहाँ पे source layer और data warehouse layer है, but actually it consists of what? 4 different stages: source layer, data staging, data warehouse layer, and analysis process. Okay, so this is overall the two-layer architecture. ठीक है. 3-layer architecture मैं आज नहीं बताऊंगा. We will explain these things. We will go through the 3-layer architecture or 3-tier architecture in next class. Whether this 2-layer architecture is clear to you or not, tell me quickly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. I have taken the attendance. So today you have got one question and that question is very important. So I am not giving you second question. So एक ही question दिया हूँ, आज वो question कर लेना. ठीक है. So सर yes. हेलो. हाँ सर, अभी कितने